Hello students, today we will discuss about character of सोहिनी. ओके, ये जो करेक्टर है ये अनटचेबल में है जो कि मुल्कराज आनंद ने लिखी है. इसमें ये बाघा की सिस्टर होती है सोहिनी और एक तरीके से ये इस स्टोरी की हीरोइन भी. ओके, आनंद हैज़ इंट्रोड्यूस्ड हर करेक्टर only to show the hypocrisy of the caste Hindus and the corruption among the so-called pious Pandits. He, on the other hand, tries to molest the chastity of the untouchable girl, Sohini. But on the other hand, his temple is polluted by the simple touch of Baka. Okay. It also shows that even among these untouchables, there are many subcastes and sweepers are considered to be the lowest. Okay, first है impressive character. As the heroine of this story, Sohini is the most impressive character in her beauty and virtues. She is the sister of Vakha and is well satisfied with whatever she has. She now here shows any high ambitions but silently performs her domestic duties and take care of every member of her family. Some critics considered her a minor character, but in spite of her small role, she gains importance by revealing various civil of the social system and take care of every member of her family. Some critics consider her a minor character, but in spite of her small role, she gains importance by revealing various evils of the social system. Anand has portrayed her character quite vividly and realistically. She is young, beautiful, modest and innocent. Next, charming and attractive. In her physical personality, she is charming and attractive, and the novelist describes her as slim, pale brown figure, soft and warm and glowing. She has sylph-like form, well-rounded on the hips, with an arched narrow waist, round globular wrists, jerking slightly for lack of bodies. Under her transparent Muslim shirt,
She is in the full youth and her matchless beauty tempts Kalinath, who makes an attempt to molest her. She is a foil to Gulabu, who considers her arrival in beauty, and so she is always jealous of her. In spite of this beauty, which is rarely found among the untouchables. She is thoroughly meek, gentle, and virtuous. She is not proud of her beauty, nor does she ever aspire for a higher and better life of her brother Vakha. Next, thoroughly virtuous, pious, and honest. Sohini is truly virtuous, pious, and honest. Her innocence and gentility are her most attractive qualities, which immediately charm anybody. She does not show any reaction to any insult at the well. Gulabo abuses and insults her body, but she remains silent. She does not have any quarrelsome intentions in spite of the fact that Gulabo is prepared to beaten her. Pandit Kalinath tries to molest her. She shapes her chastity and how, but instead of showing any fierce reactions, she simply weeps in a corner of the temple earlier, when the Pandit had asked her to come to his home in the temple for cleaning. She innocently accepts this invitation and does not realize the evil intentions of the priest. Instead of doing anything herself against it, she only tells it to her brother, and when Vakha is bent upon taking revenge, she stops him from doing so. After the death of her mother, she honestly performs all the household duties. She goes to the well, brings water for her thirsty brother, and patiently waits while all the others are crying to get the water first. जब बाघा कुछ दूर चलकर अचानक एक बहुत बड़ा मंदिर सुंदर दिखता है, वह इस मंदिर को आंगन साफ करने के लिए आया था। उसने मंदिर में सांप की चमकती हुई मूर्ति देखी और पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था। उसने देखा कि लोगों को विशाल भीड़ मंदिर में आ रही है, तो उसने छोटे मंदिर की मूर्ति के पैर छूकर अंदर जा रहे थे। लोग राम राम ओम शांति दोहरा रहे थे। बाघा इस संबंध में कुछ भी नहीं समझ पाया और उत्सुकता में वहाँ जाकर खड़ा हो गया और सुंदर दृश्य देखने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, परंतु अपने हृदय में बहुत डरा हुआ था। उसने आंगन साफ किया, परंतु वह मंदिर देखना चाहता था। फिर उसने हिम्मत जुटाई और 5 सीढ़ियाँ चढ़ गया। फिर ऊपर दौड़ा और अंदर की ओर झाँका। मीठी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अंदर एक पुजारी बैठा था। लोग अंदर पूजा कर रहे थे और आरती आरंभ हुई। बाघा ने भी अनजाने में हाथ जोड़ा, अपना सिर झुकाया, परंतु तभी पुजारी ने उसे देख लिया और चारों ओर से शोर सुनाई दिया। अपवित्र हो गया। भय के कारण बाघा का हृदय कांपने लगा, क्योंकि लोगों ने उसे पहचान लिया था। भीड़ अचानक से मंदिर से बाहर भागने लगी। पुजारी चिल्ला था कि मंदिर अपवित्र हो गया और अपने इस हवन से शुद्ध करना पड़ेगा। तब सभी लोग पुजारी का पक्ष ले रहे थे। बाघा फिर से अपमानित हुआ। जब वे बाहर आया तो उसकी बहन रो रही थी, यानी सोहिनी रो रही थी और उसने अपने साथ पुजारी के भद्दे व्यवहार की कहानी सुनाई। उसने बताया जब काम कर रही थी तो पुजारी उसकी ओर भद्दे इशारे कर रहा था। उसने दोनों उसको पकड़ लिया था कसकर। बाघा का क्रोध अब असीमित था और वह इस अपमान का बदला लेने के लिए पुजारी को ढूंढने लगा। भीड़ चली गई, परंतु बाघा क्रोध में पागल था और वह पुजारी को मार डालने पर दृढ़ निश्चय था। परंतु सोहिनी ने उसे रोक लिया। फिर उसने अपनी दशा का एहसास हुआ और धीरे धीरे मंदिर से आंगन की ओर आ गए। बाघा जानता था कि वह असहाय कुछ नहीं कर सकता था। दुख और निराशा में उसने सोहिनी को घर भेज दिया और स्वयं घर में रोटी मांगने चला गया शहर में।
has introduced her character only to show the hypocrisy of the caste Hindus and corruption among and so-called pious Pandit. He, on the other hand, tries to molest the chastity of the untouchable girl Sohini, but on the other hand, he is temple to polluted by the simple touch of Vakha. It also shows that even among these untouchables, there are many subcastes and the sweepers are considered to be the lowest. It is really goes to the credit of Mr. Mulk Raj Anand that as a social novelist he has selected his heroes from the lowest strata of society and he placed them on the honorable place. In this effort, he and R.K. Narayan stand almost as the same line. The untouchable is the first attempt and in the portrayal of the untouchable warrior. Okay. Sometime in this effort, Vakha is angry with his father also.